section वो before applying for symbol they can, that's the cutoff date for that. I made submissions on that for my lord. अगर आप थोड़ा सा इस तरह बता दें क्योंकि अपनी बंच ऑफ डॉक्यूमेंट दिए जिसमें तमाम लोगों के जो कैंडिडेट्स थे उनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं। नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि सर्टिफिकेट अटैच्ड और बहुत सारे के साथ सर्टिफिकेट उसी दिन अटैच जो कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर दैट वाज 24th of December. By that date the judgment was not in field क्योंकि जजमेंट तेरा एक को Lord, but the ECP order, I'm sorry to interrupt, my lord. My lord, these are the 3 dates which may be noted. The ECP order is dated 22nd of December, 2024. 23, I beg your pardon. We haven't reached that yet. Sorry, my lady. So, my lord, the ECP order comes first, which holds that there is non-compliance with section 208 and 209. That came on 22nd of December. Then, my lord, there is the Peshawar High Court judgment, which comes on 10/1/2024. But then there is another important date, which is 26th of December, when that judgment got suspended. ठीक है जी, So we'll have to see during that period when the certificate was issued. Correct? Absolutely. I'm with my lords. I concede this, and so my submission is that majority of them, my lord, जो हैं वो 13 के हैं, and 22nd को तो order जिस दिन आया है उस दिन तो forms 66 उस date के थे. But my lord has noted my submission. I'll move on. Grateful. लेकिन आप ये भी हमें बताएंगे कि जो तरीक़ेकार है आया गलती कहाँ से किसने की है, ये असल चीज़ आपने बताना है कि ये जो नॉमिनेशन पेपर बहुत से जो मैं देख रहा था उसमें उनमें तो डिक्लेरेशन ब्लैंक्स भी हैं सर. और अब सर देखिए जब ब्लैंक होता है तो मेरा सिंपल सा उस पे सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी है। बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं स्क्रीन पर कि सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी है। इस वक्त मुबाहिसा रिमार्क्स भी चल रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी इस वक्त मौजूद है। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। My lord, second submission is, so this was for party certificates. Second submission, Your first submission, if I just want what I've taken away from it, you saying that the certificates themselves were defective because they're void. There was no chairman because of the decision of 22nd. That's right, sir. Okay. Yeah, and they're void. They're void. They're void because they have no sanctity in law. They're not backed by any validly authorized person. Okay. Second submission, my lord, is, and for this I can refer to the Hamid Raza book, as it were, जो मैंने आपको दी थी, उसमें एक टिकट भी लगा हुआ है, which is of the 13th. Here, my lord, my submission is that as far as Mr. Hamid Raza is concerned, the chairman. I need not refer to it right now. No, is it good? Glad that you've come to this because I was about to ask you कि exactly इनका भी जरा से एक दफा factually बता देते कि what were the documents he had filed. ठीक है जी. तो पहले my lord, my submission आपने दे दूँगा. जी दे. My lord, my submission here is that Mr. Hamid Raza is admittedly is and was the chairman of the appellate number 1. He is appellate number 2 in civil appeals. The appellate number 2, my lord, being chairman, was fully able and had this option available to have issued a party affiliation certificate to himself, and upon issuing this to have contested election as a candidate of SIC. Had this been done, and had he been returned as he has been as an independent, then, my lord, the requirements that I have humbly submitted before this honorable august bench
in terms of Formulation 1 that there needs to be a सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ ने पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 67 भी जारी किया। वकील इलेक्शन कमीशन, इस वक्त वकील के दलाइल भी जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत PTI की पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 67 पर चेयरमैन गौहर अली खान ने दस्तखत भी किए हैं। would have issued the ticket to himself, being chairman. And if he had contested as SIC and was returned, then the requirement of, in my Formulation 1, of SIC having at least one directly elected general seat member would have been met. But this was, for reasons best known to him, not done. My Lord, third formulation is इसका facts sorry sir. I'm sorry to dislodge you. नहीं sir, we just want, because I'm just going to write recap के इसके document दो क्या थे sir, absolutely. two things to nominate. मेरे ज़हन में एक चीज़ आई है which I missed, so I'm just noting it down. Just remind me of it. My Lord, आ जाते हैं. So my Lord, first of all, I'm going to Mr. Hamid Raza's paper book. Mr. Hamid Raza files nomination papers on 22/12.